Okay, so welcome back again. So just now you saw the proof of Cauchy's theorem, right? So one was that if f of z is analytic and the first derivative is continuous, then integration along a simple closed curve C, f of z dz is 0, right? And then you saw the proof of modified Cauchy theorem saying that if f of z is analytic inside and on a simple closed curve C, then integration along C f of z dz is 0. So the condition of derivative is not needed, and I have shown you how you can do it. I have shown it for the triangle, right? And the triangle can actually approximate any polygon can approximate any curve, simple closed curve, right? So with that idea you can show it for any simple closed curve, not only for simple closed curve but also you can do it for so basically multiple connected regions. So even if the region has bunch of holes, you can apply this result. So now there are certain consequences of Cauchy's theorem. So that is, if there are 2 points A and B, and if I want to integrate along one curve from A to B, I will get some value, and if you want to integrate from some other curve going from point A to B, I should get some other value. Actually I will get the same value. So basically no matter which path I choose to reach from one point to other point, I will get same value. And what is the reason? It's a simple application of Cauchy's theorem, okay, which says that, so what happens if I take 2 points A and B, and if I take a curve C1 and take another curve C2, so you know that C1 and going in the other direction will make a complete circle, complete closed curve. So then I can apply the Cauchy's theorem. So that means integration along this and this is 0. That means integration along this is minus time integration along this. You change the direction, so that means integration along C1 is same thing as integration along C2, right? So that means integration from A to B from any direction, is independent of the path. The value will remain same. So I'll just show you a simple thing. That is first consequence. So we have consequences of Cauchy's theorem, right? So we have a point A and B, right? So it says that if I take a path C1 or if I take a path C2, I should get the same value. So what I mean, I want to show that f of z dz C1 is same thing as integration along C2 f of z dz, right? Along C1 and C2, which path we choose. So why is this will be true? Because integration along the simple closed curve, right? C1 and in the other direction C2, right? So basically C1 minus C2 I can say, maybe, or C1 plus C2 will be 0, right? So essentially what I am saying that integration along C1 plus, or I would rather integration along C1 f of z dz, right, and then minus of integration along C2 f of z dz will be 0, right? A से B तक C1 में गए और negative direction में गए, right? Basically that will be this thing, whole thing will be 0, right? So I can expand integration along C1 and plus C2. Now C2 का direction इस side में है, right? So this negative sign will come, right? C2 f z dz is 0. That means C1 के along integrate करें या C2 के along integrate करें, we will get the same value. No matter, that means अगर हम कोई भी path ले लें, C1, C2, C3 ले लें, C4 ले लें, any path between A and B should give you the same value, right? So basically that is first consequence. Second one, but obviously this condition is that f of z is analytic.
in a simply connected region. So some region is there R which is simply connected. Right? In this simply connected region, if I take 2 points and integrate from along any curve, I will get the same value. So if I start from A, go to B, from C1 or A to B, from A to B, going from A to B, from C2 with the same value, right? Or C3 or anything, right? I hope you got this point. So basically, what does that mean? That means it says that A to B, f of z dz is independent of the path in R joining any 2 points A and B in R, right? So this is the main result. Integration along A to B f of z dz is independent of the path in R joining any 2 points A and B in R. Okay. Second result, which is another beautiful result, this says that if f of z is analytic in a region R bounded by two simple closed curve C1 and C2 and also on C1 and C2, actually along C1 f of z dz is same thing as integration of f of z dz along C2. What does that mean? I have a curve here C1 and I have another one C2. Right, so this is not there. This is the region R basically. So I am saying that I can write down L, say K somewhere here, J, H, say D, somewhere here E, F, and say G. This is your C2. Okay, so this is a basically multiply connected region, right? So we have a curve C1, so simple closed curve C1 and a simple closed curve C2. Okay, C2 का direction थोड़ा अलग है obviously, right? So now if such situation is there, integration along C1 हम निकाल रहे हैं, it will be same thing as integration along C2. How will you do that? It's very easy. I will make a cut here, okay, and यहाँ से यहाँ और यहाँ से ये वाला ऐड कर देंगे इंटीग्रल, and then you see what you get, right? So I will make a cut here. Okay, so basically, so now f of z is analytic in this region R and so on and so forth. This is the region R, right? Anyway, I am not writing, otherwise symbols will be confused. So this is f of that condition is there. F of z is analytic inside this region R. So then we have integration along D, E, F, G, E, D, H, J, K, L, D. Do you agree? Starting from D, E, F, G, E, D, H, J, K, L and D. बन गया ना? By making this cross cut, I can traverse along the curve, right? अभी this value is 0 because of f of z is analytic in this region, right? So by Cauchy's theorem, now what I can do? I can इसको कितने टुकड़ों में बांटेंगे? 1, 2, 3, 4 टुकड़ों में बांटेंगे और ये वाला इंटीग्रल रिवर्स डायरेक्शन में होगा तो कट जाएगा.
So we are left with बाहर वाला curve and अंदर वाला curve, right? So essentially that means we have integration along DE plus integration along EFGE plus integration along ED plus integration along DHJKLD whole thing is equal to 0. हमने 4 सेक्शन में बांट दिया है, राइट? बड़ा वाला, छोटा वाला और वो कट, ठीक है? एंड नाउ वी नो दैट इंटीग्रेशन अलोंग DE इज सेम थिंग एज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन अलोंग ED, तो ये और ये कट गया, राइट? वट एवर इज लेफ्ट, इंटीग्रेशन अलोंग DHJHLD same thing as negative of integration along EFGE which is same thing as integration along EGFE, right? So C1 और C2 दोनों आ गए हमारे पास. So that means we are essentially what we are getting, that integration along C1 f of z dz is equal to integration along C2 f of z dz. Now this is a very useful property actually. So इसका मतलब क्या हुआ? What we are saying, if इस तरह का कुछ है, there are two simple closed curves, C1 ऐसे है और C2 ऐसे है, तो C1 के along integration is same thing as C2 के along by making a cross cut. Right? This technique of making cross cut is very useful, okay, when we are traversing, right? Okay, so C1 के करने के बजाय छोटे वाले के अंदर निकाल लिया, right? If there is another simple closed curve, इसके अंदर तो हम और अंदर जा सकते हैं, right? You can do in the same manner, right? So this is a very important result. Another, this is simply a consequence of Cauchy's theorem. Okay. Now we are ready to look at some examples. The first beautiful example is the following. I want to find integration along C dz z minus a, where C is a simple closed curve C. कोई बता सकता है what will be the value of this integral? Anyone? Now f of z is 1 over z minus a, right? I am saying that integration along C f of z dz निकालना है, f of z is 1 over z minus a, right? दो केस बनेंगे, because you know you can, it is clear that z is equal to a is a singularity, right? तो दो केस बनेंगे, जब सिंगुलरिटी आउटसाइड है और जब सिंगुलरिटी इनसाइड है. अगर सिंगुलरिटी आउटसाइड है, फंक्शन z इज एनालिटिक. अगर जो हम सिंपल क्लोज कर्व C ले रहे हैं और सिंगुलर पॉइंट z इक्वल टू a आउटसाइड है, सो देन इंटीग्रेशन विल बी 0, राइट? राइट? व्हाट हैपेंस इफ इट इज इनसाइड? Okay, so we have case 1 when z is equal to a is outside C, right? In that case f of z is equal to 1 over z minus a is analytic, right? Analytic everywhere in C, right, including on the curve C. And so by Cauchy's theorem, integration along C dz z minus a will be 0, right? So once the function is analytic, integration is 0 by Cauchy's theorem. अब हम देखते हैं दूसरा peculiar case when z is equal to a is inside the curve. So B portion, now z is equal to a is inside C. So I can say that, अरे यार ये अजीब सा बनता है, right? This is our C and suppose A is this point inside C. अब क्या करें? Any idea?
हमको इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है dz अबाउट. सो व्हाट वी वांट एक्चुअली इज द फॉलोइंग. I want to compute this value, integration along C dz over z minus a, right? अभी देखो कितना ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक वर्क है. A इज ए सिंगुलर पॉइंट. हम A के चारों तरफ एक एप्सिलॉन रेडियस का सर्किल खींचेंगे. आई कैन डू दैट. सिंगुलर पॉइंट को आइसोलेट कर रहे हैं, ठीक है. अब एक सर्किल बन गया. दैट इज सिंपल क्लोज कर्व. बड़ी वाली सिंपल क्लोज कर्व है, उसके अंदर एक छोटी सिंपल क्लोज कर्व है. तो इंटीग्रेशन ऑन द बिगर वन विल बी इंटीग्रेशन ऑन द स्मॉलर वन. अभी देखा है, जस्ट अप्लाई दैट फैक्ट, राइट. सो वी आइसोलेट. यहां पे दिखाने के लिए मैं बड़ा कर रहा हूं, ये छोटा सा सर्किल है एप्सिलॉन रेडियस का, एंड वी कॉल दिस कर्व गामा. And if you want to do the whole thing, so I am just saying that this value will be right by the previous result, right. So पूरे के बाद अंदर कर लिया computation, right. So now that means okay. Now on gamma, mod of z minus a is equal to epsilon. सर्किल का रेडियस एप्सिलॉन है, राइट. दैट मीन्स z minus a is equal to epsilon into e raised per I theta, polar form में, right. Because in that case mod of z minus a will be epsilon, because mod of e raised per I theta is 1, right. So we have this. So dz will be what? इसको डिफरेंशिएट करेंगे. a तो कांस्टेंट है, I टाइम्स एप्सिलॉन इंटू ई रेज पर आई थीटा डी थीटा. dz हो गया. सो आई कैन सब्स्टिट्यूट हियर. नाउ गामा एक्चुअली लिमिट कहां से कहां तक होगी नाउ, बिकॉज ये सर्किल है तो पूरा 0 to 2 पाई, राइट. थीटा की वैल्यू इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स, राइट. सो इंटीग्रेशन अलोंग गामा dz over z minus a is nothing but 0 to 2 pi. dz की वैल्यू I is equal to 0 to 2 pi I times epsilon into e raised per I theta divided by z minus a is epsilon into e raised per I theta, right, and of course d theta. I have just substituted the value of dz and z minus a. z minus a की वैल्यू ये है और dz की वैल्यू ये है, राइट. When I substitute here, this is becoming like this, which is nothing but I times 0 to 2 pi d theta is equal to 2 pi I. So this whole integral along C dz over z minus a is 2 pi I when z is equal to a is inside the simple closed curve C, right. अभी ये आइडिया बहुत पावरफुल है. एंड मान लो अभी दो सिंगुलरिटी होती तो दोनों के अलाउ हम स्मॉल सर्किल खींचते तो क्या है, इसका और इसके सम के बराबर आ जाता, राइट. लाइक दैट वी कैन कंटिन्यू. bunch of singularities are there, right, and that becomes Cauchy residue theorem, which I am going to talk about it in general, but let me do couple of more examples. Another more example, integration along C dz over z minus a raised to power n is equal to 2, 3, 4 and z is equal to a is inside the simple closed curve C. अगर बाहर है तब तो जीरो ही होगा, वैल्यू कोई इश्यू नहीं है उसको करने में, राइट. सो नाउ इसको निकालना है. सो n इज इक्वल टू 1 का केस हमने देखा है. व्हाट विल बी द वैल्यू नाउ?
आइडिया इज एग्जैक्टली सिमिलर. स्मॉल उसको सर्किल में एप्सिलॉन रेडियस में डाला, सो z माइनस ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू e रेज़ पावर आई थीटा, dz निकाला, सब्स्टिट्यूट कर दिया, पावर n में रिजल्ट आएगा और कुछ थोड़ी ना. सो इंटीग्रेशन अलोंग c dz z minus a raised to power n will be along gamma dz z minus a raised to power n is equal to 0 to 2 pi I times epsilon e raised to power I theta d theta divided by epsilon raised to power n e raised to power I n theta, right? This is 1 over 1 minus n epsilon raised to power n minus 1 e raised to power 2 times n minus 1 times pi I minus 1, right? And this whole value is 0 when n is not equal to 1. Okay, so the value turns out to be 0. Okay. Okay, so that's a nice thing to know. Now we are ready to give you the idea of Cauchy integral formula. It says that f of z is analytic in a simple closed curve C. F of z is analytic inside and on a simple closed curve C, and A is any point inside C यहाँ पे भी वही करना है, एप्सिलॉन रेडियस का हम सर्किल खींच लेंगे, राइट? कॉल इट गामा. Then actually it says that integration along C f of z integration along C f of z divided by z minus a dz is 2 pi I times f of a. Cauchy इंटीग्रल फॉर्मूला. तो पहले एग्जांपल में f of z 1 था, अब की बार वहां पे एक्चुअल में कोई f of z फंक्शन है, f of z डिवाइडेड बाई z माइनस a, राइट? तो कैसे करेंगे? सेम z इज इक्वल टू a इज ए सिंगुलरिटी, राइट? बाकी न्यूमरेटर तो एनालिटिक है, नो इश्यू. डिनोमिनेटर इज ओनली क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम. z इक्वल टू a इज ए सिंगुलर पॉइंट, उसको एप्सिलॉन रेडियस में बंद कर दिया, गामा, राइट? सो z माइनस a इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू e रेज़ पावर i थीटा, सब्स्टिट्यूट कर दिया, dz निकाला, राइट? इस इंटीग्रल में, राइट? एंड सी व्हाट हैपेंस. In fact, I should, so this is n is equal to 1 case, I should mention the general formula. We have nth derivative of a is equal to factorial n divided by 2 pi I integration along C f of z divided by z minus a raised to power n plus 1. So here actually n is equal to 1, 2, 3, whatever you want. This is a very general formula. So actually you see it involves derivative with respect to, you know, nth derivative for each n. Okay, so n is equal to 0 पे क्या होगा? We get this value. So this is easy to prove. Actually I am going to do that. Cauchy's integral formula. So basically we can write down integration along C f of z over z minus a as integration along gamma f of z
dz over z minus a, right? Now on gamma, mod of z minus a is equal to epsilon, so z minus a is equal to epsilon into e raised power I theta. Theta lies between 0 and 2 pi. Substitute कर दिया. This will be integration 0 to 2 pi f of a plus epsilon into e raised power I theta I epsilon e raised power I theta d theta divided by epsilon into e raised power I theta. कट गया जो काट सकता है. वी आर लेफ्ट विद I टाइम्स 0 to 2 pi f of a plus epsilon into e raised power I theta d theta. Now since f of z is continuous, I mean because every analytic function is continuous anyway, making epsilon tends towards 0, this whole goes so this what that means, what we are saying, सर्किल का रेडियस बहुत छोटा करते जाएंगे. जब देखा जाए सिंगुलरिटी के ऊपर हम कुछ प्रेशर डाल रहे हैं, उसको ब्लो कर रहे हैं, राइट? सो वी आर लेफ्ट विथ 2 pi I f of a, राइट? सो दिस प्रोसेस इज ब्लोइंग. सिंगुलरिटी को मार्क किया एप्सिलॉन रेडियस से और ब्लो कर दिया. एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, बूम, चली गई, राइट? एंड यू गेट द वैल्यू, राइट? तो जितनी सिंगुलरिटी हुई, 1 है, 2, 3, 4 हैं, तो सबको सर्किल में बंद करो. कीड़ा मारने के लिए दवाई ना, और दवाई डाल दिया ना, सिंगुलरिटी खत्म. सो बेसिकली यू कैन फाइंड द वैल्यूज, राइट? सो दिस इज फॉर n इज इक्वल टू, आई मीन व्हेन z minus a only is there, right? So I think so the next case is if f of z is analytic analytic inside and on the boundary C of a simply connected region R or C, right? Prove that f dash of a is equal to 1 over 2 pi I integration along C f of z z minus a whole square dz. नेक्स्ट केस अगर हम लेते हैं, इन दिस फॉर्मूला इफ n इज इक्वल टू 1 द फर्स्ट डेरिवेटिव, एंड दिस इज करना कुछ नहीं है, डेफिनेशन लगा देनी है डेरिवेटिव की यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 के केस में, एंड यू राइट हैंड साइड को कंप्यूट करना है, और फिर हु इज योर फेवरेट फ्रेंड, एप्सिलॉन, एंड देन इट्स ऑल डन. देखो ना एप्सिलॉन कितना पावरफुल है. So I will not prove it in general, but I will give you an idea actually, right? So in this case what I am saying that we have a region R here somewhere, sorry, हाँ, this is the region R, this is curve C, यहाँ पे एक A है, उसको एप्सिलॉन में बंद किया, एप्सिलॉन रेडियस है सर्किल में, गामा. So if A, suppose I take another point A plus H here, ले सकते हैं अंदर. So f dash of A f of a plus h minus f of a divided by h, limit h tends to 0, right? इसको लगा दिया फॉर्मूला 1 over 2 pi I integration along C 1 over h 1 over z minus a plus h minus 1 over z minus a fz dz. So essentially we get f dash of a is equal to 1 over 2 pi I integration along C f of z dz divided by z minus a minus h z minus a. Simplify कर लिया, right? So now if you look at
right hand side of this formula, f dash of a is 1 over 2 pi I integration along c f of z divided by z minus a whole square. I am going to rearrange the terms कि ये वाले आ जाएं और बाकी जो कुछ बचता है उसको छोड़ देते हैं. So let us see this. So actually you can show that f dash of a is equal to 1 over 2 pi I integration along c f of z dz divided by z minus a whole square plus h divided by 2 pi I integration along c f of z dz divided by z minus a minus h times z minus a whole square. So is rearrangement of terms which I think you can verify. I am not going to do that. So now अभी हमारा ये तो फॉर्मूला आ गया, अब बचा ये, इसको क्या करेंगे, एप्सिलॉन में डाल दो इसको ना, मॉड लगा के शो दैट समहाउ, बस वही है. तो ओनली इस कोर्स में तुमको एक ही चीज देखना है, वो है इनइक्वालिटीज और एप्सिलॉन का खेल है, बस और कुछ नहीं. राइट. So now how do we show this whole quantity goes towards 0? अभी इसके लिए हमने क्या किया, उसको गामा में ले गए ना, ये वाला पोर्शन. वी आर गोइंग टू यूज दिस गामा सर्किल हियर. So I want to show that h over 2 pi I integration along c f of z dz divided by z minus a minus h times z minus a whole square goes towards 0 as h tends towards 0. Because if h tends towards 0, left hand side derivative हो जाएगा f dash of a. Right hand side में we have whatever it is. This is independent of h. The first term is independent of h. Second term ये है. This should goes towards 0. Right? That's what we need to show. So now h हमारे चॉइस में है. चूजिंग h so small in absolute value, so I am saying that so that a plus h lies in gamma. gamma एप्सिलॉन रेडियस का सर्किल है, तो हम कह रहे हैं चलो मॉड ऑफ h को एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी ले लें. ठीक है, बिल्कुल पास पास a और a plus h. राइट. Now in that case I am going to use this inequality. Z a mod of z minus a minus h is at least mod of z minus a minus mod of h. This will be bigger than epsilon minus epsilon by 2 is equal to epsilon by 2. Also since f of z is analytic, मैं एक्चुअली तुम्हारे लिए सब्जी बना के दे रहा हूँ, मैं सब्जी बनाने के लिए रेसिपीज दे रहा हूँ. अभी इनइक्वालिटी डालने का काम तुमको दे देता हूँ. राइट. सारी चीजें निकाल के दे देता हूँ. राइट. एफ ऑफ दैट इज एनालिटिक, सो वी आल्सो हैव, वी कैन फाइंड ए नंबर कैपिटल M सच दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इज लेस देन M, कैपिटल M. अगर एफ ऑफ एनालिटिक है तो हम मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन M बना सकते हैं फॉर सम नंबर M. सो यहाँ पे डाल देते हैं y. That also you need to think. Now in that case what we have, you can say that whole value of h divided by 2 pi I integration along gamma f of z dz divided by z minus a minus h z minus a whole square absolute value is less than or equal to mod of h capital M 2 pi epsilon divided by 2 pi एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन स्क्वायर. यहाँ पे हम हमेशा वो इनइक्वालिटी यूज करते हैं, इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ ऑफ द डीजेड एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M इनटू L. हमने आज सुबह सुबह बताई थी ना, और कुछ नहीं है. आज हमने सुबह पेरीमीटर में भी वही, ट्राइंगल में भी पेरीमीटर में वही यूज किया था, यहाँ पे वही यूज करना है. राइट. सब कुछ आ गया, काट कूट के एप्सिलॉन में x टू 0 करो, काम खत्म. राइट. सो यू आर लेफ्ट विथ, so this whole overall thing is 2 times mod h into M divided by epsilon square. Now this goes to 0 as h tends towards 0. यही हमको दिखाना था.
As h tends towards 0, the whole thing should go 0. तो हो गया. So we have the formula. अब जनरल फॉर्मूला तो मैं प्रूफ नहीं करूंगा, हमने खाली फर्स्ट डेरिवेटिव का प्रूफ किया है, राइट. सिमिलरली यू कैन डू द नेक्स्ट वन, राइट. एग्जाम में n इज इक्वल टू 2 का पूछ लें तो गए ना तुम लोग, इनइक्वालिटी. एनीवे, सो वी हैव इन जनरल दिस फॉर्मूला दैट n dash of a is equal to factorial n divided by 2 pi I integration along c f of z divided by z minus a raised to power n plus 1 for n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. ये beautiful formula known as Cauchy integral formula. ये formula बहुत सारी beauty समेटे हुए है. You will see that अभी हम जब टेलर सीरीज का काम करेंगे तो यहाँ वो नेचुरली अपीयर होता है Cauchy इंटीग्रल फॉर्मूला वहाँ पे. सो लॉट ऑफ ब्यूटीफुल कनेक्शंस, राइट. हमने खाली n इज इक्वल टू 0 के लिए आपको दिखाया, n इज इक्वल टू 1 के लिए दिखाया, 2 और 3 I leave it, right. Now another thing, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो मैं लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएशन 1/2 पाई आई. सम टाइम हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है. f of z z माइनस a डी सेट. अगर हम f of a का फॉर्मूला है उसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू a, सो वी विल गेट 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन लॉन्ग c डेल ओवर डेल a f of z z माइनस a dz. This is sometime a useful formula that we can use. Okay, so I think now I will do two more examples और आज का क्लास खत्म. तो नेक्स्ट क्लास में we will do टेलर सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज एंड कुछ सिमिलरिटीज. उसके बाद कॉम्प्लेक्स का अध्याय खत्म, राइट. सो example, integration along c sin pi z square plus cos pi z square z minus 1 into z minus 2 dz. इसकी वैल्यू क्या होगी? सो f of z is sin pi z square plus cos pi z square और नीचे 2 हैं. तो हमको, अगर आपने वैदिक गणित पढ़ी होगी ना, तो पार्शियल फ्रैक्शन करने का सिंपल तरीका है ना, 1/z minus 1 into z minus 2 कैन बी रिटन एज डिफरेंस ऑफ दोज टू थिंग्स, राइट. राइट. और वो फॉर्मूला टूट जाएगा दो अलग अलग भागों में, दोनों जगह Cauchy इंटीग्रल फॉर्मूला लगा दिया, काम खत्म, राइट. सो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग. वे c इज एक्चुअली सर्किल mod z is equal to 3. अब 3 रेडियस का सर्किल है तो z is equal to 1 और z is equal to 2, बोथ आर सिंगुलर पॉइंट, राइट. ऊपर वाला तो न्यूमरेटर तो एनालिटिक है, कोई इशू नहीं है. सो वी नो दैट 1/z minus 1 into z minus 2 minus z minus 1, right. z minus 2, right. इसको यूज कर लिया, फॉर्मूला अलग अलग कर लिया. So we need to apply the Cauchy integral formula for a is equal to 2 and a is equal to 1, right. So we have integration along c f of z z minus 2 dz will be 2 pi I sin pi 2 square, right, plus cos pi 2 square is equal to 2 pi I. Okay. Similarly, integration along c f of z z minus I will be minus 2 pi I, right. अब दोनों को फॉर्मूले में रख दिया, राइट. आई मीन इन दिस एक्सप्रेशन, राइट. तो हमको इसका निकालना था, यहाँ पे we have used this expression here, separate करके you can compute the value, right. It's a fairly straightforward thing.
So basically integration along C f of z divided by z minus 1 into z minus 2 will be 2 pi I minus 2 pi I, which is 4 pi I, right? So I am going to do one more example actually. Integration along C mod z is equal to 3 e raised to power 2z e raised to power 2z divided by z plus 1 raised to power 4 dz. f of z e raised to power 2z है, एनालिटिक है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं और z is equal to minus 1, so a is what? Minus 1 here, right? So we can find f of z is equal to e raised to power 2z, n is equal to 3 here, ये n plus 1 यहाँ से आएगा ना, n plus 1 is equal to 4, right? So we have f triple z is equal to 8 times e raised to power 2z. So f triple dash of minus 1 is equal to 8 times e raised to power minus 2. So 8 times e raised to power minus 2 is equal to factorial 3 divided by 2 pi I integration along C e raised to power 2z divided by z plus 1 raised to power 4 dz. So the answer is 8 pi I e raised to power minus 2 divided by 3. So I think ये एग्जाम्पल निकालना तो बहुत सिंपल है, राइट? फॉर्मूला अगर मालूम है तो आपको काशी इंटीग्रल फार्मूला मालूम है तो यू कैन डू दैट. सो वट एवर आई टोल्ड यू, काशी इंटीग्रल फार्मूला ऑल्सो यू कैन बी यूज फॉर multiply connected region, means when there are holes in the region, then also it works. Okay, so that can be done. So I think that's all for today, I guess. Yes, yeah, वो तो फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल n है ना टर्म में, nth डेरिवेटिव ऑफ a इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइड बाय 2 pi I इंटीग्रेटेड अलॉन्ग c f of z ब्ला ब्ला, राइट? z मैंने से होल इज फॉर n प्लस 1. आज तक मेरे को रटा हुआ है, मैं कितने साल पहले पढ़ा था, राइट? तुमको भी रट जाएगा. क्यों? बाय द वे, कॉम्प्लेक्स के लिए जो बुक है, स्पीगल वाली बुक काफ़ी अच्छी है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. और अदरवाइज यू कैन लुक एट दैट ब्लू बुक, राइट? स्पीगल की बुक मिल जाए तो अच्छा है, अदरवाइज ब्लू बुक इज ऑल्सो देयर. सो नाउ वी आर लेफ्ट विद लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, एंड थ्रू दैट क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटीज और कॉम्प्लेक्स का काम तमाम. देन वी विल स्टार्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस. ब्यूटीफुल सब्जेक्ट. कॉम्प्लेक्स में एज यू नो मेरे दिल का फेवरेट है वो रीमान जीटा रीमान हाइपोथेसिस. इफ यू कैन डू दैट, if you want to work on that, that's fine. Anyway, thanks, that's all. Thanks all.